आज का एपिसोड मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। मान लो आपको पूरे के पूरे अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा करने आप कौन से इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे? डाउ में, S&P 500 में या नैस्डैक में? वेलकम टू पेटीएम मनी टॉक्स एपिसोड 12। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अमेरिकन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आज के शो पे हमारे साथ हैं पॉपुलर इन्फ्लुएंसर चैनल इन्फ्लुएंशियल इंडीज से मिस्टर साहिल खन्ना। आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज वेल एंड दिस प्लेटफॉर्म जिसपे आई होप a lot of new people have shown up today. So, मैं हूं मुजम्मिल सैयद, आपका होस्ट। वी एट पेटीएम मनी आर ड्रिवन टू प्रोवाइड वैल्यू लाइक नो अदर। हम चाहते हैं कि एज अ प्लेटफॉर्म हम आपको वो सारा इंफॉर्मेशन दे जो आपको नए अपॉर्चुनिटीज, नए स्ट्रैटेजीज और अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करता है। पेटीएम मनी टॉक्स इज वन सच प्लेटफॉर्म वी बिल्ड टू एंश्योर कि पेटीएम मनी से जो जो जुड़ा हुआ है वो सारे मार्केट इंफॉर्मेशन का सही तरीके से लाभ उठा सके। सो आप कहेंगे पेटीएम मनी टॉक्स है क्या? सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे हम एक पॉपुलर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को लेके आते हैं, जैसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, और उनको फेस टू फेस करते हैं विद द एक्सपर्ट्स ऑफ द फाइनेंस वर्ल्ड। हम कभी फंड मैनेजर को ले आते हैं, कभी CIO को ले आते हैं, बट वी गेट टू यू द टॉप executives of different AMCs, different fund houses, different investment institutions. So ये premise है। जब ये दोनों लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में बात करते हैं, तो ऐसा कंटेंट, ऐसा वैल्यू क्रिएट होता है जो आपस में आए बिना नहीं क्रिएट हो सकता। So now that we're sure of what Paytm Money Talks is, let's move on to the most important part. हर एपिसोड शुरू करने से पहले I genuinely like to thank everybody who joins us every day. Every time that we do a Paytm Money Talks show, we get a lot of people who join in live, a lot of people who tell us what they like, what they dislike, what would they like to see. And we are really, really appreciative of the contribution that you've made to the platform so far. With your love and support, we've reached really, really good viewerships on our show, and we have also received a lot of inputs on how and what we can do to make this experience a little bit better. So अगर आप चाहते हैं कि हम ये कंटिन्यू करते रहें, हम आपसे बात करते रहें, आपके लिए ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करें जिसमें मैं और आप और पेटीएम मनी ऐसा कुछ आपको ला के बताए जो आपको कहीं और से नहीं मिल रहा, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी, यू नो। सो आप ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को डेफिनेटली बताएं। अगर आप अभी अभी ज्वाइन करे हैं तो आप प्लीज अपने दोस्त को मैसेज कर सकते हैं कि एक शो हो रहा है जहां पे अमेरिकन मार्केट्स पे इन्वेस्ट करने के लिए टॉप रीजंस समझे जा रहे हैं, एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ गुड वैल्यू आउट ऑफ इट। 7 बज चुके हैं एंड बिफोर आई स्टार्ट आई रियली वांट टू अपोलोजाइज। जनरली हम ऑन टाइम पे होते हैं। आज टेक्निकल डिफिकल्टीज लाइक एवरीबडी हैज, वी आर नॉट बाउंड बाय some supernatural things, but आज हमारे पास भी एक technical difficulty थी and we managed to solve it in 5 minutes thanks to our team who puts a lot of effort in the back end to put something that you're seeing right now. So good, I would like to really commend them for the work that they put in, and let's begin the show. So coming back to our main agenda, how to invest in all of America. शो शुरू करते ही मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आपको पूरे अमेरिका में पैसिवली इन्वेस्ट करना है तो कौन से इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे आप, डाउ, नैस्डैक या S&P 500? ये सवाल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अनलाइक इंडिया जहां सेंसेक्स और निफ्टी में स्टॉक सेम है, या
यहाँ सारे इंडेक्स में अलग अलग स्टॉक्स है और इसके रीजन भी कई है। जैसे मान लो आप गूगल से आकर्षित होके कहे कि मैं S&P 500 में इन्वेस्ट करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो S&P में है ही नहीं, वो नैस्डैक में है। वैसे ही द डाउ जो इंडेक्स है वो 30 ऑफ द बिगेस्ट यूएस कंपनीज को ट्रैक करता है। S&P 500 tracks the 500 largest US companies across various industries and sectors. S&P 500 75% represent करता है मार्केट को। Nasdaq on the other side is also known as the Nasdaq Composite and it is comprising of more than 3000 companies. So आप कहेंगे कि मुजम्मिल सबसे ज्यादा कंपनीज नैस्डैक में है, तो अगर पूरे के पूरे अमेरिका में इन्वेस्ट करना है तो शायद हमें नैस्डैक में इन्वेस्ट करना है। बट द आंसर इज नॉट दैट, द आंसर इज दैट अमेरिका में 4,500 कंपनी से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और इनमें अगर एक्सपोजर चाहिए तो आपको डिफरेंट वेज और मेथोडोलॉजी से लेना होता है। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास आज ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज का एपिसोड इम्पोर्टेंट है और हम आपके पास इसलिए लेके आए हैं वन ऑफ द टॉप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स दैट वी नो, मिस्टर साहिल खन्ना। साहिल इज वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ऑन द इंटरनेट। हम उनको जानते हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज नाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर ये रोज वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करते हैं जो हमारे सारे व्यूअर्स जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन में रिलेटेड है उनके लिए बहुत वैल्यूबल होती है। He has more than 11 lakh followers across various platforms that he is engaging people with, and we're very very happy to get him on board. So Sahil, without further ado, thank you for being a part of the show. Welcome on board. थैंक यू मुजम्मिल, बहुत बढ़िया। आप बताइए। चल रहा है। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी ने हमें भी थोड़ा वॉलेटाइल बना दिया है। रोज कुछ कुछ ऐसा नया देखने मिल रहा है एंड तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। इज इट समथिंग दैट रोलर कोस्टर देख रहे हो आप? एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है। पिछले अगर आप 2 दिन से चेक करते हो, बढ़ता है घटता है। आज के दिन अगर आप देखो तो आज के दिन पूरा एक रोलर कोस्टर चला है। पहले नीचे गया, फिर उठा है, फिर एकदम घटा है, फिर उठ गया। इसमें एक पिछले कुछ दिनों में मैंने अगर आप देखो तो 1700 पॉइंट नीचे गया यू नो इंडेक्स एंड देन नेक्स्ट दिन 1700 पॉइंट ऊपर भी आ गया। आई हैड नेवर सीन इन द 6-7 years that I've been closely associated with stock market in one form or the other. 1700 पॉइंट का वन डे रिकवरी वाज समथिंग absurd, you know. अगर हो भी जाए तो कुछ अनयूजुअल हुआ है ऐसी फीलिंग आती थी। बट ऐसा ऑलमोस्ट रोज रोज हो रहा है कि 800 पॉइंट गिर रहा है, 1000 पॉइंट चढ़ रहा है, फिर 300 पॉइंट गिर रहा है, फिर 500 पॉइंट चढ़ रहा है। सो इट्स वेरी वॉलेटाइल एंड मेरे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग टाइम, यू नो। तो लाइक वी राइटली स्टार्टेड विद द टॉपिक के मार्केट में क्या हो रहा है। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका पर्सनल ओपिनियन मार्केट लेंस में क्या है कि यू नो क्या हो रहा है मार्केट में। एंड इसी चलते आपको लगता है मेरे जैसे लोगों को डरना चाहिए, मेरे जैसे लोगों को सतर्क होना चाहिए? what is it that we should do to you know take care of ourselves in this volatile market? देखो, पर्सनली जो मेरा मानना है, आपने बोला एक्टिव इन्वेस्टर, तो एक्टिव इन्वेस्टर को तो डरना नहीं चाहिए। अगर जो लॉन्ग टर्म सोच के बैठा है, अगर कोई ट्रेडर है कि आज सुबह लेना है शाम को बेच देना है, उसको डरना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत फ्लक्चुएशन है। तो एक ही दिन में बहुत कमा भी सकते हो, बहुत लॉस भी ले सकते हो। पर अगर ओवरऑल गेम देख के चले, पिछले 10 साल के अंदर भी देखते हैं, तो हमने एक क्रैश अभी देखा था लॉकडाउन के टाइम पे, हमने रिकवर किया है। अगर पिछले 20 साल की बात करके चलते हैं तो हमने 2007 के अंदर एक और क्रैश देखा था जो कि बहुत बड़ा क्रैश था। पर ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो ओवरऑल मार्केट ऊपर ही रही है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करके चलते हैं तो हमको ये छोटा मोटा जो ऊपर नीचे हो रहा है उतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं देखना चाहिए। हाँ, अब एक बच्चे को लालच आएगा, अगर किसी के पास में कम पैसे है, मार्केट क्रैश होने वाली है, सबके सब बता रहे हैं, क्रैश होने देते हैं फिर ले लूंगा। तो हो सकता है अगर आपकी किस्मत चलती है तो आपको 20% 10% नीचे मिल रहा है। पर ओवरऑल लॉन्ग रन पे अगर 25 साल की बात करके चलते हैं तो वो बहुत बड़ा फर्क नहीं डालेगा आपको। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरना नहीं चाहिए। हाँ जी, क्या आपकी ये बात बहुत सही है कि लॉन्ग रन में यू नो एवरीथिंग पॉजिटिव बिकॉज़ इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इज समथिंग दैट वी ऑल बिलीव इन। वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल मूविंग फॉरवर्ड एंड दैट कीप्स मी
at bay, you know, like कभी-कभी portfolio बहुत लाल हो जाता है and then you wonder कि what is it do I have to do, and then I realize नहीं, current scenario will only allow us to get, you know, cheaper valuation, maybe re-entry the stock in some form, but continue to move forward. इसके साथ साथ आपको क्या लगता है, what are the ways how, you know, if somebody is scared about a situation like this, what are the ways how he can protect himself, like what should he adapt in a way to ensure that ये volatility का इतना impact उन पे नहीं हो रहा? देखो, अगर लॉजिकली देख के चलते हैं कि हम मान के चल रहे हैं लॉकडाउन हो जाता है, अभी फिर से वायरस स्ट्रेन आता है और लॉकडाउन हो जाता है, तो कुछ सेक्टर्स बढ़ेंगे, कुछ सेक्टर्स घटेंगे। तो यहीं पे एक कंसेप्ट आता है डाइवर्सिफिटी, मतलब अपने जो पोर्टफोलियो उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई रखो। ये मत करो कि आपने सारा का सारा पैसा डाल दिया है हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटैलिटी के अंदर, यार मैं होटल पे जाता हूँ गोवा घूमने के लिए, मेरे को ये XYZ होटल चेन अच्छी लगती है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ जी। कल को अगर किसी सेक्टर में कोई दिक्कत आई तो आपके पूरे पैसे जा सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं पर जा भी सकते हैं जी। एक चीज ये है। दूसरा, अगर आपको किसी इंडस्ट्री में ट्रस्ट है, जो कि मेरा पर्सनली मानना है, डाइवर्सिफाई करो, जो कि सेफ बेट लगती है, पर मैं थोड़ा सा कई जगहों पर रिस्की भी रहता हूँ। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि आपको लगता है यार आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकती है, जो कि आपको दिख ही रहा है जी, तो उसमें अगर आप चाहो तो थोड़ा हेविली इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे पर्सनली मैं थोड़ा सा ईवी में बिलीवर हूँ, इलेक्ट्रिक वाला आने वाला टाइम में बढ़ेगा, तो जो सेक्टर्स उसमें जा रहे हैं तो मैं उसमें थोड़ा टेम्पटेड रहता हूँ यार ये चीजें बढ़ेगी। तो मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का जो रेशियो होता है उसमें थोड़ा जो इस टाइप की रिस्की चीजें होती है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देता हूँ, पर मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगा जी। हाँ, एक्चुअली मैं ये कहने वाला था अपने व्यूअर्स को कि साहिल does a lot of research. He is responsible for, like, he has a team of people who help him make his own opinion and all of that. So when you are listening to us, pick it up as a reference point. आप ये एक information source जैसा देखें, but you do your own due diligence. Nothing that we say is like a recommendation for us to buy something or sell something or take a particular action. We are here to provide perspectives that you may use in your life. So one good thing Sahil आपने कही कि आप diversify करते हैं, and diversify you can do across segments, sectors, you can do it across industries, you can do it across market caps, and you can also do it through different geographies. So in the same context, what's your take on investing in America? क्योंकि अगर आप न्यूअर कॉन्सेप्ट्स में यू आर, जैसे आपने कहा 5G में आप इंटरेस्टेड हो, ईवी में इंटरेस्टेड हो, तो ईवी यू फॉलो. नाउ देयर इज अनदर लेयर ऑफ revolution that is happening out there, tech revolution, which is the internet of things. And जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल, हम अभी एप्पल लैपटॉप से बात कर रहे हैं, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिंग इन अमेरिका is a good way of diversifying for somebody who's in it for the long run? देखो, मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट को ना एक तरह का बिजनेस लेके चलता हूँ। अब वो किसी भी ज्योग्राफी में हो, किसी भी कंट्री में हो, अपने को मैटर नहीं करता। मेरे को कहीं पे पैसा लगाना है, मुझे रिटर्न चाहिए। अब सिंपल सी बात, अगर मैं अपना पैसा यूएस में किसी कंपनी में डाल रहा हूँ जो कि पहले से ही बहुत बड़ी हो चुकी है, तो शायद मुझे उतना ज्यादा पैसा ना मिल पाए। अगर मैं इंडिया के अंदर एक ऐसी सेक्टर में डालता हूँ जो कंपनी रिलेटिवली छोटी है, तो शायद बड़ी हो सकती है। जैसे आपने यूएस की एप्पल की बात करी, मुझे पर्सनली एप्पल बहुत पसंद है। मतलब ऐसा कई बार मैं अपनी वीडियोस में बोल देता हूँ, कई लोगों को लगता है मेरे को एप्पल ने पैसे दे रखे हैं। एप्पल ने अपने आप को जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजिशन किया, अभी पिछले 4-5 साल के अंदर देखते हैं, वो बहुत अच्छा किया है और आने वाले टाइम में और अच्छा ट्रांजिशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि उन्होंने अपने चिप्स को चेंज कर दिया, अपने सिलिकॉन चिप्स बनाए। पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल शॉर्टेज चल रही थी, फिर भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। उन्होंने कस्टमर्स को सुन के अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। तो अगर मैं एज अ धंधा पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं उस कंपनी में पैसा डाल रहा हूं जी। अगर वो कंपनी बढ़ेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा। तो अगर मुझे उसका धंधा समझ में आता है और मुझे लगता है ये धंधा बढ़ेगा, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो यूएस की अगर मैं बात करके चलूं, तो मुझे अभी करेंटली ये एप्पल ही दिखाई देती है। कुछ छोटी छोटी कंपनीज और है, जैसे मैं टेस्ला की बात करके चलूं, मुझे लगता है पहले से ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो रखी है जी। इलेक्ट्रिक में मैं हूं, पर मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिक में अगर इन्वेस्ट करूंगा मैं इंडिया में करूंगा, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत छोटी है। अगर आप देखो, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं, मैं अगर मैं दिल्ली की बात करके चलूं तो चार्जिंग स्टेशंस नहीं है आसपास।
अभी हाँ गाड़ियां जी, नहीं बिक रही है, ज्यादा लोग नहीं ले रहे, पर मुझे 100% पता है आने वाले 3-4 साल के अंदर हमको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई देंगे। तो अगर दिखाई देंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसके अराउंड कंपनीज बनेगी, स्टार्टअप्स बनेगी, जरूर। कुछ भी बनेगा। तो अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिलेटिवली ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर मैं इंटरनेशनल बात करके चलूं तो मुझे अभी करेंटली यूएस के अंदर एप्पल पसंद है, जी। बस। हाँ जी। So, your philosophy is very close to what Warren Buffett says. You have to consider companies that you invest in as your businesses yourself, and you have to look at it from the point of view of saying that you're running this business, you're buying a part of the business, which is exactly what shares are. But considering you have that philosophy, what are the reasons that do you think that people should or could consider investing in America? कि क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज अ थिंग एंड एज यू राइटली सेड कि नया टेक्नोलॉजी जो उभर के आ रहा है दैट इज एट द नेसेंट स्टेज राइट नाउ, इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। इंडिया में ईवी है, वैसे ही मीडिया स्पेस, बायोटेक, हाँ ऑल ऑफ दीस बिल्कुल। आर इन अमेरिका। सो ये मद्देनजर रखते हुए व्हाट इज योर opinion on what are the different reasons rather to invest? One is the company way that you said that you follow. What could be the other way how you can, why anybody should consider America? मोर ओवर अगर देखा जाए तो वहां पे आपके पास में कुछ स्टेबल कंपनीज है जी। जो आपको स्टेबल रिटर्न दे सकती है। अभी इंडिया हम्म। ग्रो हो रहा है तो ग्रो का मतलब दोनों साइड होता है। हम्म। ऑल दो हम सबके सब पॉजिटिव सोच रहे हैं कि पॉजिटिव जाएगा, ऑल दो जाएगा पॉजिटिव, पर दोनों साइड है। जी। यूएस में कुछ कंपनियां बहुत ज्यादा मैच्योर है और उनके पास फंड है, तो हमको लगता है कि उनके पास एक प्रूवन ट्रैक है, तो वहां पे अपने को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर अच्छा। आइडियली मेरा वही तरीका, देखो सिंपल सी बात ये है, दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। जी। मैं रिलेटिवली एक्टिव इन्वेस्टर हूं, तो मैं कंपनी को स्टडी करता हूं, देखता हूं, मुझे अच्छी लगती है तो ठीक है। दूसरा एक और तरीका है जो कि पैसिव इन्वेस्टिंग होती है, तो बहुत सारे फंड्स बने हुए हैं जहां पे उन्होंने बहुत सारी कंपनियों का पोर्टफोलियो जोड़ रखा है। वो पास रिजल्ट दिखाते हैं आपको कैसा चल रहा है, आप वहां जी। से ट्रैक करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर मैं अपना पर्सनली बताऊं, ये प्रिविलेज है मेरी, मैं अगेन किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा कि मेरे पास अभी के टाइम पे फंड्स थोड़े ठीक होते हैं तो मैं पूरा शेयर खरीद सकता हूँ। जी। कई लोगों के पास अगर उतने फंड्स नहीं है तो आपके पास रूट ही पैसिव है इन्वेस्ट करने का। जी। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है इनके एक एक शेयर की वैल्यू बहुत सारे लोगों की सैलरी के बराबर होती है। हाँ जी। बर्कशायर हैथवे का जो एक शेयर है वो आई थिंक $2 लाख का है, बिल्कुल। $200,000। तो $200,000, but the good part in investing in America is that you can buy in fractional, a fraction of a share खरीद सकते हो, and बिल्कुल। that really helps common people to buy हम्म। shares like Berkshire Hathaway. So बिल्कुल। one of the other things that I've noticed over the past, because we've been doing certain shows over and over again, and one thing that I've figured out in my conversations is एक rupee depreciation is a thing, right? And that रुपी वर्सेस डॉलर जो डिप्रिसिएशन हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे रिटर्न्स में भी होता है, बिकॉज द इंडियन रुपी इज डिप्रिशिएटिंग एंड डॉलर इज का वैल्यू बढ़ रहा है। सो व्हेन यू बाय इन अमेरिका यू बाय इन डॉलर्स, एंड दैट डॉलर अप्रिशिएट्स, सो रिलेटिवली आउटपुट ज्यादा बहुत अच्छा होता है। सेकंड, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अमेरिका में राइट नाउ there are some companies who are creating new paths, like जैसे UI path है, then biotech is a new generation thing that is going to come forward. अभी मेटा जो अभी फेसबुक रह चुका है, so Meta as a बिल्कुल। company has entered into metaverse. You must be knowing about people investing in all of that. So एक media channel उभर के आ रहा है. Then we have people as big as Amazon. Amazon and Apple combined have so much money that if there is a technological revolution of any form, they can begin it in house, and वैसा वाला angle. Now one of the also reasons that मेरे एक last show में, I am not too sure कौन थे, but he told me, and you know how all these conversations come handy, but he told me once that apparently Indian GDP is close to about $3 trillion, right? सिर्फ if you check NYSE, Nasdaq अगर आप चेक करो तो वो $20 ट्रिलियन है, एंड Nasdaq composite
itself is 20, close to about 6 times Indian size. Hmm. So they're so big, and their capacity to move around the world at such a pace is an incredible thing that I see over and over again, and I get astounded. So, Hmm. मेरा personal reasons to invest in those companies are that they've been at the forefront of technological revolution in one form or the other, and it's very difficult for a homegrown Indian company to go and beat that. Indian companies Hmm. in the Indian context will make sense, I'm sure. Like Reliance will do, with the revolution that they're trying to bring in the retail space. कि Hmm. retail में वो मैं जियो मैं को बेसिकली मैं कर बेसिकली रहा है। रिलायंस पे कहता हूँ, रिलायंस को सब करना हाँ, है। सब अगर आप कुछ करना देखोगे, होता है। वो ऑयल टू केमिकल में भी घुस गया। अभी जी, रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे हैं हम, उसमें भी है, रिटेल में भी है, जी। टेलीकम्युनिकेशन में घुस गया। अभी मैं कल परसों वही ही न्यूज पढ़ रहा था कि वो सैटेलाइट भी वो सोच रहे हैं, इंटरनेट देंगे सैटेलाइट से, वो उसमें भी घुस रहे हैं। पूरा फोन निकाल क्रॉस दिया, इंटीग्रेशन, लैपटॉप निकाल हर रहे हैं। सब कुछ कर सकते हैं। वो दुकान में हाँ। जो भी बिक सकता है ना, रिलायंस रिटेल हम्म। के, वो सारी चीज हाँ। बेचेंगे वो। अगर किसी दिन हम्म। हेलीकॉप्टर होगा तो वो भी हो जाएगा। वो बट वो कमिंग बैक मेटावर्स टू द में भी पॉइंट, काम कर रहे हैं, वो मेटावर्स में क्या भी काम चीज? कर रहे हैं, वो हाँ, मेटावर्स में भी इतनी बड़ी काम कर रहे हैं। कंपनी है कि उनका एक हम्म। डिवीजन तो फॉर श्योर होगा ही। मुंबई इंडियंस इज हाँ। लाइक अ टाइम पास थिंग दैट दे बिल्ट ऑन द साइड. हम्म। But never mind. Coming back to the point, so मेरा personal input on America has been strong because of these reasons. Now, हम्म। now that we understand your perspective, हम्म। and how we're going about doing things, there's a new fund that has come out, and I just wanted to know if you've heard about it. The name of the fund is Navi Total, uh, US Total FOF. So the whole हम्म। premise of this fund is the fact that अगर आप S&P 500 करते हो तो यू ओनली इन्वेस्ट, लाइक अगर पैसिवली आप ETF ले ले रहे हो तो S&P 500 का ETF लो तो S&P 500 आपको मिलता है, लाइक द 500 हम्म। टॉप कंपनी. But you're still not exposed to the rest of the companies that are out there. So this fund is actually looking at different forms, like trying to cover the entire market of America in the ways that they can by investing हम्म। through Vanguard. तो ये फंड के बारे हम्म। में आई जस्ट वांटेड टू नो इफ यू हर्ड अबाउट इट, व्हाट्स योर टेक, हम्म। आपका क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट इन्वेस्टिंग इन अमेरिका थ्रू ETFs? हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी के लिए, अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है ये जी, ऑप्शंस, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से यूएस में अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप इस थ्रू से जा सकते हो, एक्टिवली ना करके, क्योंकि ये एक्टिवली जो ना। चीज है, एक्टिवली ना करके, हाँ जी, एक्टिवली अगर क्योंकि आपको मुझे भी घुसना है तो ऐसा उसके लिए लगता आपको है नॉलेज कि होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। फर्स्ट तो मुझे तो हम्म। ऐसा लगता है कि इंडियन कंपनीज जिसके आसपास हम रहते हैं, लाइक हम्म। and we are not in a position to understand what's happening around us, in the companies that we एग्जैक्टली। are. And then हम्म। we are imagining about a land called America, which is so far away, and you don't know हम्म। at ground level what is happening. They're like a day behind and sorts. So everything that's happening is delayed for you to catch up on. And हम्म। passively for international funds makes sense for me for that reason. हम्म। ये फंड के बारे में डिस्कस करने के लिए वी हैव समबडी एल्स आल्सो टुडे. उनको इंट्रोड्यूस मैं पहले करूंगा, बट आई जस्ट वांट टू आस्क माय व्यूअर्स टुडे, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, साहिल इन्वेस्ट थ्रू स्टॉक्स, तो ही वांट्स टू स्टडी स्टॉक्स. अगर आप ऐसा कोई स्टॉक स्टडी करके अमेरिका का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सा स्टॉक होगा? Like, what will be the stock that you would actively, like Sahil, figure out कि ये stock will run for the longest time? So ये कौन सा stock होगा? I would love if you guys put on your comments and let us know about your thoughts about the same. Right now, the most important point, we have to invite yet another important person of the industry. We have Mr. Shyamsunder today with us, and it's been a very good association with him so far, because I've done a show with him before. It was a very nice show where we shared a lot of value in terms of understanding what are the different opportunities which are out there. But I'm really happy that to help us understand what's happening, how we can make the most of American markets, we have him today. So I'll like to introduce him a little and let you know about what I think he is. I'm sure he can speak a little bit about himself
more than I do. So Hari is the business director and the fund manager of Navi Mutual Fund. He has over 16 years of experience and has spent most of that time at Franklin Templeton. He's one of the most experienced and knowledgeable professionals that you will find in the category, and I'm really really happy to have him on the show today. But although what I've said may have made you think, "Hey, acha, like a fund manager or this or that," but you'd be very happy to know that Hari has spent most of his time in research analysis, finding you the right opportunities for most of his time. So he's been a fund manager himself. He's been a research analyst at different layers for the institution and for the fund itself. And that is why he would be in a better position to give us knowledgeable insights about America, investing in America, and a very valuable member to the Paytm Money Talks family. So, without further ado, I'd like to introduce you, Mr. Hari. How have you been? It's been a long time, and I'm glad that we got an opportunity to come back on the show again. Good to be back, Muzamil. Thank you for that kind introduction. And Sahil, I've been listening to your views as well. It's been great to hear your views as well. Hi, Hari. Hi. Thank you. So, Hari, would you say a little bit about yourself? Like, I'm sure I've given like a vague understanding of who these people are, but Sure. could you speak a little bit about who you are, how your experience has been in the last few years, and what you and Navi are trying to do with new products like the ones that you just mentioned in the market? So, a little bit about yourself and a little bit about Navi, and so that we can associate ourselves. Sure, I think you captured it quite well in terms of what I've done in the past. So one of the things that I enjoy doing, which is what we had spoken also, some of the conversation also had been about. I really enjoyed analyzing businesses, and so I think that is one of the that's what drove me towards the this profession. That's what drove me towards the market. मुझे वो fundamentals understand करने में I think that was what really drove me कि what makes a business do well, what makes a business succeed, what makes it fail. So that is the interesting thing about markets for me. It's a great leveler, it's a great learner. As Sahil also pointed out that sometimes if you do it well then it works very well, but there are times when you have hard lessons to learn as well. So that's what I think the markets is about. Active investing, particularly, is like that. Now, between active and passive, I think one of the things to point out is about maybe 10 साल पहले जो 10 साल पहले की बात है अमेरिका में अबाउट 25% जो फंड्स एसेट्स जो थे म्यूचुअल फंड में वो पैसिव होते थे आज के रेट में वो 50 से ज्यादा हो चुके हैं and the reason is that it is really difficult to beat the market. It has been very difficult for the fund managers, experienced fund managers है जो जिनके पास बहुत experience है, जिनके पास वो वहां पे रहते हैं, वो जानते हैं कि exactly क्या हो रही है, उसके बावजूद वो मार्केट को बीट करने में थोड़ी इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. तो एज ए Yeah. रिजल्ट वो परफॉर्मेंस की वजह से passive investing has been growing in Yes. US and it has reached more than 50%. तो Navi जो है which I joined about 6 months back is looking at some of these products right now as well. So we have launched 4 passive products so far, and our aim is to grow the passive industry itself and let investors know what the passive investing is about, the benefits of it, and when they should be looking at taking passive, and when active is also appropriate for them. I think that is what we are looking at doing. And when you're looking at passive, you should look at what are the options available in terms of you should have low cost and with good tracking error, low tracking error as well. That's another concept जो होती है. But simple सी बात ये है कि passive सस्ता है, अच्छा है, और it is something which is worked in many markets. So I think that is the attraction for it. So cool. So Navi
And philosophy, आपका background, now that it's become a little clearer to the audience today, I just wanted to understand from my perspective. This is a little personal. कि Sure. मैं genuinely जानना चाहता हूँ from somebody who spent so much time in research. um, अभी market scenario, 3% का up and down every now and then. आपका क्या view है? What's happening in the market, and is there anything common masses aren't seeing right now that you would want to enlighten us with? Okay, I think there is always some reason to be worried about markets. जब markets ऊपर जा रही है तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि अभी महंगा हो चुका है तो फिर लेने की why should we take it now? जब market गिर रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि नहीं अभी और गिरना बाकी है तो अभी क्यों ले? तो I think लोग there will always be some reason why people can say that अभी invest नहीं करना चाहिए. But I think what is important to note is that it is always it is the amount of time you spend in the markets, it compounds, it grows. वो growth तो सालों के बाद दिखाई देता है जब हम when we look back तो और when we look at the history it always कि ये सब volatility कब हुआ वो दिखाई भी नहीं देता है. So I think that is so this volatility which you have in any year, you should assume that you will have at least maybe 15% kind of 15-20% corrections in a year from top to wherever the bottom of the year is. तो उतनी volatility के साथ एक साल में तो मान के चलो उनको opportunities की तरह देख सकते हो और उसमें and if you are able to keep adding in those through the point, then it serves you well. So what do you think is the best form of accumulating right now? Do you think lump sum जाने की जरूरत है at this point? If the market reaches a certain point, do you think lump sum करना जरूरी है कि SIP अभी भी on रखनी चाहिए हमें? Absolutely. I think SIP definitely on rakni chahiye. I think the way SIP is basically you're getting more when the markets fall and less when the markets are going up. So you worry about markets, are they expensive or not? वो तो ऐसी ही हो जाती है. I mean, that gets taken care of automatically. Your units will fall if the markets are more expensive. You get more if it's falling. So I think that is definitely a good steady way to keep on putting in money. See, lump sums की बात रही, I think it works for certain people, but उसके लिए you'll need after experience, even anybody who is viewing this, after maybe many years, you will get the idea of maybe if the market has fallen 50%, then you'll get that हिम्मत रहेगी बस अभी डालना चाहिए. But normally at that point you will be सब लोग डरे बैठे होंगे जब COVID हुई and when the market fell as much as it did, almost in 40% गिरी, तब शायद lump sum अच्छा, I mean in hindsight it looked good. Yes. अब की बार to take that decision then is another game altogether. Absolutely. It is at that point of time you don't know what is happening. I mean, you're sure that everything is going to go. I mean, and that's the psychology of the markets, and that's why it's so difficult. But if you maintain that, say that SIP, ठीक है, SIP चलने दो, got the best deal at that point of time. You've been able to add the most number of units at that point of time. So I think that helps you. I mean, that should be a part of your core wealth building strategy, definitely. So what you've said, does it also stay true for investing in American markets? Like we're looking at different things happening all around the world right now, some more critical, some not. They've been volatile as well. With Fed's angle into the picture, do you think it's a good opportunity or a good proposition right now, this moment, to begin adding some exposure to American markets in general? So I think always in markets, the thing is that 10 years ago is the correct time to have started, because the amount of growth which you always see over longer periods of time, it always feels like 10 saal pehle was better time to put in money. And that will always be 2031 or 2032 mein jab hum baat kar rahe honge, tabhi you'll say that maybe 2022 is a better time to put than 2032. So I think that is the nature of these volatility. I think definitely there will be there will always be volatility in the markets. See, I think one of the things which is happening right now in the US markets is that there is definitely inflation which has picked up. So I think that is one of the points which people are slightly concerned about. I think the way to look at it is that interest rates move in cycle, and inflation is
what it leads to, उसके बाद जो होती है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं सेंट्रल बैंक जो है. तो अभी जो है सेंट्रल इंटरेस्ट रेट जो है 0% पे है यूएस में. तो वो तो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं था, और जी, अभी से हम वहां से वो हमेशा घटा जानते देंगे. थे हाँ, ये हमेशा चेंज जानते हैं. होना करेक्ट, कभी ना करेक्ट. कभी. We had to be prepared for this. So now that you're saying that it's cyclical in nature, and like you rightly said, the best time to plant a tree was yesterday or maybe 10 years ago. In this context, technology and all the other things that are coming along, are you particularly very positive about the technological revolution or the scale of revolution that is coming by the integration of a lot of tech that is happening right now, where I believe we're at a stage far above and beyond, where we could say, okay, internet, it's not the new internet, the Yes. internet is getting merged with another form of internet, and they are like this symbiosis is leading rise to a lot of new spaces. For example, influencers a couple of years ago wasn't a thought because YouTube wasn't a thing. And Correct. vis-a-vis, we wouldn't have been in a position to speak. To be in a position to sit back and say कि 10 साल के बाद reality क्या होगी is almost impossible today. So, which was the same during the internet phase, and then the housing and everything that happened first for the first time. आपका in general viewpoint कैसा है? Is it positive? Is it mixed about these new associations popping up? I think we are always living in an extraordinary time of our lives. I mean, if you look back 10 years ago, um, many of the things which we take for granted today, like even work from home. 10 साल Yes. पहले work from home भी, I mean, it was very difficult to think about. Yeah. The number of technologies which have had been enabled over this period of time to be able to, for us to work from home without even thinking about it, has just grown over the last 10 years. So Yes. over the next 10 years, I cannot sit here and say that 2032, how's it going to be? I can't predict. But what Yes. I know is we are in a very exciting time. I think we've touched upon some of the topics like EVs. That definitely is happening. That's going to happen. We're also now talking, of course, we spoke a bit about Reliance and how they're talking about hydrogen. So hydrogen, and the government also has got a green hydrogen mission. Uh, so hydrogen also will pick up in terms of energy. We're looking at new technologies. 5G is around the corner. 5G will also, and it will combine with virtual reality, and you will have a new set of technologies which will be created, which will be enabled. Yeah. Of course, things like the metaverse and Web3 are being spoken about. We don't know today how that will take form. So Yeah, that's and what how makes it it. will impact our lives. Maybe the next conversation you and I have is in a metaverse, sitting, virtually together, and I look forward to that. me too, me too. So now that we understand your perspective about what's happening in the market, what is America looking like, and long term perspective, kya hai, I would really want you to take the our viewers through some of the core aspects of the new fund that has come out, so that Sure, they understand that looking at the current context of things, what are the things that you guys have taken care of? How does it sure, protect the interests of anybody who's watching the show right now, and sure, how it can be a lucrative opportunity in years to come. So sure, the stage is all yours. I would request the team to put up the slides, please, and sure. we can take it. Hari can take it forward from there. So Great. So what we have is the Navi total US total stock market fund of fund. It's an so this is a fund of fund which will invest into Vanguard's total stock market ETF. So now for that, I think what is important is to understand Vanguard, and Vanguard is the pioneer of is a pioneer of passive investing. The founder of Vanguard was Jack Bogle, who created the concept of passive investing. And so they have seen tremendous growth in passive investing from $1.8 billion in 1975 to today they are at about $7.2 billion. So we have a fund which will invest into their largest fund, which is the Vanguard Total Stock Market ETF and Total Stock Market Fund. Now,
Before that, I think what's important is we've been speaking a bit about the U.S. markets and why is it important to invest outside the country as well. Now, I think to do that, I think one of the perspectives is that you look back in a difficult part of जैसे जब in the Indian markets 2010 से 15 for example जब there was a slowdown in the Indian economy तब most of us would have just thought that चलो इक्विटी के बजाय हम कहीं और डाल देते हैं जैसे रियल एस्टेट में या सोने में या फिक्स्ड इनकम में बट एट दैट टाइम equity markets maybe there was something happening in another market. So that is जब हम सिर्फ अपने देश के बारे में सोचते हैं and this is not just us, it is across the world. This is something called home country bias. जिनको नाम देना है उन्होंने ये home country bias नाम दिया है. And what that means is that even a person sitting in any other country, यूरोप में या यूएस में बहुत होता है, सिर्फ अपने देश में इन्वेस्ट करेंगे when there are opportunities available outside also. During that period of time, we knew we were consuming products, we were using Google at that point of time, a lot of most of us, and we were using other products as well. But we didn't. Maybe many of us didn't think that we can directly invest in those markets itself. When you're consuming these products, you can also try and invest, as Sahil had also pointed out. So I think that is what you're trying to protect against. There are equity as an asset class, equity as a group, is something which you can have opportunity somewhere else in the world also at the same time as you're having here. And if you look at the returns which have happened on the right hand side, so you can see that there are periods of time when one does better than the other and the other does better than the other. So it keeps varying around, and that means that your returns are more smooth. You don't have as much volatility. The utar chadhav won't be as much as what you are facing normally. So I think that is the beauty of international diversification. You get returns of wherever the best of the world is happening, and in US has been a market which is about 43% of the total global market, total world markets actually. And I think that means it captures a lot of the trends which is happening. Many of the companies there have a lot of their revenues coming from outside the country as well. So I think that's another thing about the US markets, which mean that it's not just entirely US, but you're capturing some of the global trends also. So I think that's why that's a compelling reason to invest in the US markets. So what we are bringing is the Navi US Total Stock Market Fund of Fund. As you said, it's investing into the total Vanguard Total Stock Market ETF, which is benchmarked against the CRSP US Total Market Index. So a lot of words I've just said. Basically, it is a passive fund. We will be investing into the ETF of that passive fund. And this index, it has got 4,000 plus stocks. 4,000 plus stocks. It has got large cap, mid cap, small cap. Mid cap and small cap tend to do better when the economy is picking up, when it starts on an uptick. So I think that is something which can be captured with the CRSP total market as well. When the economy does well, you will start seeing some of the benefits of that as well. I think so. This basically captures the total market. That's where the name total market. The other thing which I would say is we have spoken also a bit about the dollar. If the dollar becomes more expensive, the rupee becomes a bit cheaper. We have seen that happening in the last 10 years. The rupee to dollars moved from 49 to 75. Investing in this helps. It helps because we will take whatever money is invested with us and put it into the dollar denominated ETF. And so when you want to redeem it, you will get the conversion of the current rate. So that dollar appreciation, whatever happens, is a benefit which is there for this, for investing in something like this. Apart from that, well, I would say that we've discussed a lot about why we should do diversification. Of course, the other thing which I would point out is the expense ratio. This we are offering the plan at about 6.06%. What does this mean? What is the significance of this 0.06%? This means that we are of the total returns which will be given,
every fund takes a percentage for managing their funds. Now that typically, if you look at other similar kind of funds, it will be definitely higher. I'll encourage you to go and do your own research. But this we can say right now as we speak is clearly by far the lowest. So the maximum amount of returns which will happen in the US markets as captured by this index will come to you. And that is what makes it a simple, low cost, comprehensive offering for you. If you're thinking US markets, think this fund, the Navi US Total Stock Market Fund of Fund. A good short summary of what the fund has to offer. Why should we be interested in investing in America? And also all the benefits that come along with it. One of the things that I'm personally bullish on is the fact that, like you rightly said, that most of these companies that are in America, headquarters in America, they're investing heavily in countries like India, maybe in Africa. They say Amazon has an office here, and Amazon is one of the biggest retailers in the country. And similarly, we have different other companies, which in different forms may be associated with different countries and whatnot. So investing in America in a way is investing in the world, and that allows you to have wider breadth. And especially when it's the size is the sheer magnanimity of the size of the American market also represents the diverse opportunities it brings us. Is really exciting for me. So now we move to the part of the show which I like really much, in which we get Sahil to ask you some questions, really tough questions that he generally gets, and some questions that aren't generally answered on social platforms in general. So Sahil, I would request you to come up with these questions that people are generally asking about, apprehensive people asking about investing in America, with Hari himself, so that he can answer them. And over to you. हाय हरी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मेरे दिमाग में भी आता है और बहुत सारे ऐसे लोगों के दिमाग में आता है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या है, एक्सपेक्ट सबको ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश कर सकती है। आप अभी जो आप बोल रहे थे कि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है यूएस के अंदर, अगर हम टेक स्टॉक्स की बात करके चलते हैं, जैसे हम फेसबुक की बात करके चलते हैं, तो उनके नंबर्स घटे हैं क्योंकि माइक्रो कंटेंट बढ़ रहा था। तो फेसबुक बहुत बड़ा प्लेयर था, वो घटता हुआ दिखाई दिया। नेटफ्लिक्स ने ये बोला कि हम इंडिया में हार गए। उनका एक बहुत बड़ा सेगमेंट था, उन्होंने पूरी जान लगा दी इंडिया के अंदर। अब अगेन इनडायरेक्टली उसके ऊपर फर्क पड़ेगा नेटफ्लिक्स के शेयर्स के ऊपर, और ऐसे ही सबके साथ पड़ सकता है क्योंकि वो कंपनी, मतलब जो उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो चुका है, प्लस साथ में इन्फ्लेशन भी चल रहा है, तो क्या पता क्रैश आ जाए। तो मेरे जैसे, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में थॉट चलता है यार क्रैश आने दो, मार्केट घटेगी तब डाल देंगे। जैसे आपने बोला कि ओवरऑल बात वही आती है, पर मैं इस टाइम पे 10,000 रुपए डाल रहा हूं वर्सेस मार्केट 30% घटती है, उस टाइम पे 10,000 डाल रहा हूं, तो मेरा ओवरऑल अमाउंट बढ़ जाएगा। तो लालच ही आता है हर एक बंदे के दिमाग में। तो अपने दिमाग को कैसे बनाया जाए, और आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये आर्ग्यूमेंट जो है 3 साल पहले भी कर सकते थे और 5 साल पहले भी कर सकते थे। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव बीन वेटिंग कि कब आ जाएगा क्रैश। कोविड में आ गई क्रैश, पर कितनों ने एक्चुअली इसका फायदा उठाया वो मुझे पता नहीं। आई थिंक दैट वाज अ डिफरेंट एंड सो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली आर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो आई थिंक देयर इज अ पॉइंट। द पॉइंट सही बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है वहां पे, एंड थोड़ी वो इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो शायद इज स्टार्टिंग टू मूव अप नाउ। तो वो उसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए मेरे हिसाब से, इफ यू लुक एट पास्ट क्रैश, यू आल्सो स्पोक अबाउट इट ना, 2008 में जब क्रैश हुआ था या 2000 के टाइम में जब क्रैश हुआ था, दोनों बार जब क्रैश हुआ था तब इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक पे था, ना कि जब इंटरेस्ट रेट साइकिल बॉटम में है। So that is what I would like to say, कि it is very rare, it is very few cases I can maybe think about that normally interest rate cycle के शुरुआत में एक बड़ी सी क्रैश आ जाए। And the reason for that is this, कि वहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो वहाँ पे अभी जब देख रहे हैं तो फिर वहाँ पे होम बिल्डर, इफ यू लुक एट द प्राइसेस ऑफ होम प्राइसेस, दे हैव स्टार्टेड पिकिंग अप वेरी स्ट्रांगली।
The number of loans which are being disbursed there is picking up strongly. Supply is very tight. There are lot of strong demand from very good customers who are looking to buy homes, and the wages are also picking up, so people have money to spend on that. So I think some of these are meaning that underlying कहीं तो economy की strength है, थोड़ी बहुत strength है, and in that situation, whether a market, even if it falls, I think the growth itself will be able to ensure that you will end up seeing the market not having a major crash. That is my perspective right now. ओके, मतलब आपने ये बोला कि हमको अगर इन्वेस्ट करना है तो हम रिटेल जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपने ये बता देख दिया सकते हमको. हो. आप रिसर्च कर सकते हो. That is हाँ. not my investment advice, but maybe that's something which you can evaluate as well, Sahil. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन जो कि मेरे दिमाग में भी आता है, शायद अगेन जो आपने एक इफेक्ट बोला था होम कंट्री वाला सीन, कि मैं इंडिया से हूं तो मेरे दिमाग में शायद इंडिया बायसनेस है, तो मैं इंडिया में इन्वेस्ट ना करके यूएस में इन्वेस्ट क्यों करूं? क्योंकि मेरे को पता है कि पिछले 20 साल में इंडिया ग्रो किया है और नंबर वाइज बहुत अच्छा ग्रो किया है, और आने वाले 10 साल में वो और अच्छा ग्रो करेगा. तो अगर मैं ओवरऑल रेशियो की बात करके चलूं तो मैथमेटिकली पास डेटा के हिसाब से इंडिया ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मैं यूएस में क्यों जाऊं या किसी और मार्केट में क्यों जाऊं? राइट. ये पिछले 30 साल में अगर देखोगे तो यूएस मार्केट्स हैव गिवन मे बी 8.9% डॉलर रिटर्न्स. रुपी के डेप्रिसिएशन जोड़ के वो कुछ 11.5% हो जाता है. तो इंडियन मार्केट्स हैव गिवन अबाउट 9 to 10%. So I'm not saying that this will necessarily be the same going forward, but I think what is important is that if you look at that earlier, I put up the chart about different periods of time. So when there are bad times in one country, you are able to get the benefit of it by diversification. I think that is what diversification does. And even in any portfolio, you have a collection of stocks. उसमें से कुछ stocks ऐसे हैं जो बढ़ रही है, पर वो हमेशा बढ़ेगी नहीं, so उसका भी correction आ जाएगा, and there'll be other stocks which will take over and do well. So like that, your portfolio also should have that exposure that sometimes India may not do as well for any reason. I mean, there could be any reason, but your portfolio should not suffer. Your portfolio should be able to be protected at any time. So it is a bit of थोड़ा insurance जैसे सोच सकते हैं कि you're able to protect yourself from any adverse impact which may happen. There may be any reason, as we saw. I mean, 2010 to 15. At 2010, the outlook was so bullish. Everybody was, and the market started moving up. Then, uske baad, there was some lost time in the markets. So I think that is that tends to happen in many markets. So, and the markets don't move together. So I think that is why you should have diversification, not just in your stock baskets, but you should have diversification also in your country baskets. So that is why you should look at not just India but also outside India, and US is the largest market. ओके, तो मतलब आइडियली आपका ये कहना है कि जैसे इंडिया में हमको लग रहा है ईवी सेक्टर बढ़ेगा, लग रहा है, तो इंडिया में ईवी पे इन्वेस्ट किया, पर मेरे को लगता है यूएस में एक XYZ सेक्टर बढ़ सकता है, तो वहां पे मैंने उस सेक्टर पे बेट किया. ऐसा कह रहे हो आप, तभी डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, या फिर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डॉलर इंडिया मार्केट क्रैश भी कर सकती है, अगर करेगी तो यूएस बचा लेगी मेरे को, या इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हो? देखिए, आई थिंक दोनों तरफ है. आई मीन, आई थिंक इट्स बोथ वेज दैट वेयर विल द नेक्स्ट इनोवेशन कम फ्रॉम. लाइक ईवी की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक पिछले 10 साल में टेस्ला हैज बीन अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ग्लोबली, आई वुड इमेजिन. आई थिंक इट इज गॉन फ्रॉम वर्चुअली नथिंग टू अभी अमंग द टॉप 5 कंपनीज. 10 years back, we didn't know this company, and innovation can happen anywhere. US is a very innovative economy, and a lot of innovations keep happening there. India is also definitely on that curve. You're right. I mean, we should be bullish on EV in India, and that can be one part of the portfolio. So among various things, EV is not the only thing which will grow in the next 10 years. There are so many other things which will grow in the next 10 years. You can think that consumption will also grow because India will become more prosperous. In US, you will see other newer business models also come up. You will see new vaccines, new innovations. So the direction where which are the new companies, new innovations which are going to take place, we cannot predict today. So, and
what we know is that countries and economies have innovation, and that is reflected in the corporate, in the companies which are able to make the profits from that. So India, I think, has got a lot of it going for it, but US will also have some of that happening. So you should be able to participate in that also. I would look at it positively that you are able to participate in the innovation for tomorrow by looking at India and US, not India or US. ठीक है। तो जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे को यूएस में कुछ लिमिटेड कंपनियां पसंद है जो कि बड़े जाइंट्स है। एप्पल Correct. जैसे मैंने बताया था, और मेरे को फेसबुक पे भी थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है एक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फेसबुक में करेक्शन आ गई है। फेसबुक जो मेटा पे काम कर रहा है, मे बी टाइम लगेगा। उन्होंने शायद लॉकडाउन के चक्कर में अपना नाम बहुत जल्दी चेंज कर दिया, सब कुछ कर लिया। मुझे लगता है कि अभी मेटा आने में जो हम बातें कर रहे हैं वो 4-5 साल लगेंगे। मेरे पास ऑक्यूलस पड़ा है, मैं यूज करता हूँ। अब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टेज है वो बहुत ही नेसेंट है। Yes. हो सकता है कि कल को एप्पल निकाल दे एआर गॉगल्स, जैसे अभी आपने लगा रखा है, ऐसे ही लगा रखा है, हमको सामने ही वीआर में क्या कुछ दिख रहा है। वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये कंपनियां शायद इंडिया में आपको दिखाई नहीं देगी। हाँ जी। अगर आप इस टेक्नोलॉजी, अगर आप उसकी बात करते हो, रिलायंस की बात करते हो, रिलायंस ने भी अपना ग्लास निकाला। तो अगर आप उसकी अनाउंसमेंट देखोगे और अभी तक वेबसाइट देखोगे, डेवलपमेंट देखो, तो कुछ भी नहीं है। यही ऑक्यूलस ने अपना सेकंड वर्जन निकाल दिया है। एप्पल कहा जा रहा है अगर ये चिप शॉर्टेज ना होती तो शायद इस साल या फिर नेक्स्ट साल निकाल देगा जी, पॉसिबिलिटी। So revolutionary. Every market there will be some stages where everybody is, and everybody is going to learn from one innovation happening somewhere else. Like Tata made a lot of use of what Tesla did in the States, and like Hari was also saying that American market is very innovative in the sense that they're at the forefront of anything that becomes the norm. What we're seeing in India is in a way replication of what we did. Like Flipkart is what Amazon was, Nykaa is what Amazon is in a way whatsoever. So we understand the context now, and I was really happy that we could get these questions through. Hari, thank you for coming on board and helping us elevate these thoughts that we have about investing in America in general. And I hope all the best. I wish you all the best for the new fund that has come out. Sahil, thank you for thank you for inviting me, coming on board with us to our show today. Indeed, it was a good conversation and I thoroughly enjoyed it. I would just request everyone watching here right now that there's a lot of input, there's a lot of things that we can do together if we talk, and I would request you to message us, like comment down there, let us know what are the things that you would want us to add, modify in the way that we can provide you better value over a period of time. And with that, I'll be taking a leave, and this was like a wonderful session that I would have to bring to a close. There's a new session that will come on very soon on Paytm Money Talks again. So if you want to be a part of that, if you want to see as that video as well as this one, you could subscribe us. You'll get the notification on board. So thank you very much. Until then, tata. Bye bye. Thank you. See you.